Just close your eyes and picture this. ट्रैम्स ग्लाइड कर रहे हैं जैसे किसी ने ब्रश स्ट्रोक मारा हो. विंडो बॉक्सेस में फ्लावर्स बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे खिल रहे हैं. लेक इतनी शांत है कि डक्स भी मेडिटेट कर रही है. इट्स क्लीन, काम और हाँ, छोटी छोटी सरप्राइजेस से भरा हुआ. वेलकम टू ज्यूरिक, where the streets sparkle. लेक हल्की सी सांस ले रही है और हवा smells like chocolate. This isn't just another travel video. ये है how Zurich made me feel. From the moment I arrived after a train ride, जो कि इतनी स्मूथ थी कि लगा जैसे एक लाइव ट्रैवल ब्लॉग स्क्रॉल कर रहा हूँ, तब ये रियलाइज हुआ, दिस सिटी wasn't built, it was designed. Neat streets, sharp trams और calm energy का full package. And you can be a good friend too by subscribing to my channel travelrhapsody.in. And हाँ, don't forget to hit that bell notification for instant update on new videos. बेसिल से सिर्फ 1 घंटा लगा और पूरा मूड स्विच हो गया. ओल्ड टाउन से शुरुआत की. स्ट्रीट्स इतनी फोटोजेनिक जैसे किसी ने यूरोप पे सॉफ्ट फिल्टर लगा दिया हो. कॉबल स्ट्रीट्स, पेस्टल बिल्डिंग्स और वो गोल्डन लाइट जो जाने का नाम ही नहीं लेती. साइलेंस यहाँ ऑकवर्ड नहीं लगता है, यहाँ वो एलिगेंस जैसा फील होता है. एक छोटी सी गली में चलते हुए नीचे से पानी का स्ट्रीम निकलता दिखा, बिना क्राउड, बिना साइन बोर्ड. एवरी कॉर्नर लुक्स लाइक अ स्लो सिनेमैटिक रिवील. और हाँ, मैंने फोटोज लिए काफ़ी ज़्यादा. इट फेल्ट लाइक अ वेस एंडरसन फ्रेम. बस यहाँ स्विस बैंक्स और फॉन्ड्यू ऐड कर दो. माई नेक्स्ट स्टॉप वॉज लेक ज्यूरिक. लेकिन ये यूजुअल लेक वॉक नहीं था. इट फेल्ट लाइक अ मूविंग मेडिटेशन. लोग हेडफोन्स में, जॉगर्स अपनी पेस में, डक्स भी बिल्कुल बैलेंस्ड. कुछ लोग कॉफ़ी लेके बैठे थे और कुछ वाइन. कुछ सिर्फ लेक को देख रहे थे. सब अपने अपने जोन में थे. Just walking around the bits of old town of Zurich. Beautiful place to just come in the evening, sit and relax. Nice golden hour with the golden light. I love this. I think it's a perfect setting, very romantic one by the river. Lot of restaurants, options to sit and eat. और फिर आया Stern and Grill, local legend, a Swiss sausage that crackles at first bite. I would give it 10 out of 10 and would fly back for it any day. Next up, the famous Lindt home of chocolate. Day 1 पे ट्राई किया बट स्लॉट ही नहीं मिला. टोटल मूड ऑफ. सो आई हैड टू क्विकली मेड प्लान बी. Gonna head to Rhine Falls. Hopped on a train and ended up at Rhine Falls, Europe's biggest waterfall. And yes, बड़ा मतलब really बड़ा. Just walking downhill from the station and I can already hear the sound. 350 feet of drama. Simply stunning. I am here at the biggest waterfall of entire Europe. The views are exceptional. You can see the boat ride there. It's just like the mega falls. They take you up close to the falls. That's one of the viewing decks on the other side. I walked the trail that winds around the falls, climbed up past the old stone castle, then followed the path all the way down to a narrow platform that brings you face to face with the madness. You are so close, it feels like the water could blow you downstream. With spray on my face, a roar in the ears or goosebumps, it was full power. Scary and gorgeous, दोनों एक साथ. No filter needed, just goggles. Day 2 पे लिंट होम ऑफ चॉकलेट्स ने फाइनली दरवाजे खोले. Inside, LED storytelling walls, interactive cookout journeys, mood lighting and what not. ये बस एक चॉकलेट फैक्ट्री नहीं थी, एक चॉकलेट का इमर्सिव एक्सपीरियंस था. ड्रीम फैक्ट्री.
It's a TED Talk wrapped in truffle coating. And yes, you get to make your own chocolate bar. And yes, I made mine. And yes, I bought too much. And no, I'm not sorry. So I picked the base, add toppings, slapped my name on it. We can personalize your own chocolate bar with a message that you want to give. Pretty cool. And honestly, it gave me a full on Charlie at the Willy Wonka factory energy. यहाँ you can pick any number of chocolates and keep trying. मैंने तो पाउच भर लिया with sea salt, caramel, blueberry and every color of this little temptation. So, 17 francs to be honest is not a lot considering that you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types of Lindor chocolates on your way out. End तक तो I was so high on sugar rush with a sense of am I allowed to be this happy? Anyway, yes, I spent a small fortune of course, shopping from a wide variety of Lindt chocolates. Did I regret it? Never. You think Zurich is all about chocolate and lakes, but wait, Zurich का shopping scene भी cool है. वो Federer वाले on running shoes और Freitag का shipping container store with one of the most unique styles, totally mind-blowing. Back in Zurich the next day, I was packing, but the city was just gearing up for something big. Shops shutting early, trams slowing down. Today, there is supposed to be one of the biggest open air music fest of Zurich. Unfortunately, I didn't know about it, so I didn't plan for it. But having said that, the station is buzzing with people, all dressed up, ready to go and enjoy the party by the lake and by the entire city. You have artists like Anna Min Van Buren, Kygo, and many other known renowned artists who are going to be performing. Zurich is a city that works like a Swiss watch and feels like a perfectly curated playlist. और हाँ, I bought a watch too. Playlist नहीं, real वाली watch. It's that kind of a city where the details don't just exist. There is flow, there's form, there's flavor. हर डिटेल परफेक्टली प्लेस्ड है, जैसे शहर ने आपके आने से पहले रिहर्सल किया हो. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर केओस, ये वो जगह नहीं है. बट अगर चाहिए काम, चार्म और चॉकलेट्स, तो वेलकम होम. एट दिस पॉइंट आई वुड से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू स्टे अपडेटेड, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द नेक्स्ट एपिसोड.